everyone, welcome to superGrads CAT. So today we will be talking about another entrance exam जिसका level CAT से और बाकी entrance exam से easy होता है, that is MAT. तो MAT का जो attempt है वो काफी सारे aspirants, ये exam वैसे साल में 4 बार होता है, but lot of aspirants write this attempt in February, especially जो MBA aspirants हैं जिनके बाकी ओमेट्स हो चुके हैं अगर आपके, तो आप ये एग्जाम भी कंसिडर कर सकते हो. एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, जस्ट एज CMAT. अनदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज कि इसके 3 मोड्स हैं, तो आप तीनों मोड्स में से जिस भी मोड में एग्जाम देना चाहते हो आप वो दे सकते हो. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके तीनों मोड्स. We will be talking about the important dates related to this exam. We will be talking about the exam pattern and the marking scheme. We'll also be talking about the syllabus, MAT 2024 का syllabus as well. So let's get started. तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, सो इट इज आईमा, दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. मैट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है. मैट स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. नाउ एलिजिबिलिटी इज, इफ यू आर अ ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई, जैसा हमारा कैट और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स में एलिजिबिलिटी होता है, सेम एलिजिबिलिटी है यहाँ पे. Now here if I talk about the modes of the exam, so you have 3 different modes over here. The very first mode is remote proctored internet based test, that is the IBT mode. अब IBT mode का क्या मतलब है कि आप ये एग्जाम अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से भी लिख सकते हो. यू नीड टू बुक द स्लॉट. तो यहाँ पे रिमोट प्रॉक्टर्ड इंटरनेट बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि एग्जाम आप कहीं से भी लिख सकते हो. सो दैट फैसिलिटी इज हियर. Second mode is the PBT mode, that is the paper based test. What does this mean? Definitely you have to fill the OMR sheet for this. Now this is completely paper based test. The third mode is the computer based test. जैसे हमने CAT और बाकी एग्जाम्स लिखे हैं, the mode of computer based test, this is same. तो तीनों में से आप जिस भी मोड में अप्लाई करना चाहते हो, you have the option. नाउ अनदर ऑप्शन दैट यू हैव इज कि आप इस एग्जाम के 2 अटेम्प्ट दे सकते हो. तो आप चाहो तो पेपर बेस्ड और रिमोट प्रॉक्टर्ड, दैट इज इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, एक ये आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको इस एग्जाम के 2 अटेम्प्ट देने हैं. आप डबल रिमोट प्रॉक्टर्ड यानी कि 2 बार आप IBD भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर 2 अटेम्प्ट देने हैं. तो एक कंप्यूटर बेस्ड और एक रिमोट प्रॉक्टर्ड, ये भी ऑप्शन है हमारे पास. तो और एक और ऑप्शन है पेपर बेस्ड का और CPT का यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का. सो ये अगर हमें इस एग्जाम का दूसरा अटेम्प्ट भी देना है तो वी कैन सिलेक्ट व्हाइल फिलिंग द मैट एग्जामिनेशन फॉर्म. नाउ वन थिंग यू नीड टू नोट ओवर हियर इज कि कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर एन एडिशनल मोड, यानी कि अगर आपको किसी एडिशनल मोड के लिए अप्लाई करना है सो यू हैव टू पे अ फी ऑफ 1200. तो एक्स्ट्रा मोड के लिए अगर हम अप्लाई करने हैं सो वी विल हैव टू पे 1200 का फी एडिशनली. नाउ एक्चुअल फी ये है एग्जाम का अगर आप कोई एक मोड सिलेक्ट करते हो, बट अगर आप डबल मोड से जाते हो तो यू हैव टू पे 1200 रुपीज एक्स्ट्रा. Now here when you are opting for an additional mode you also have an advantage associated. वैसे मैट का जब आप फॉर्म भरोगे so you will see कि आपको इंस्टीट्यूट्स भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तो आप मैक्सिमम अगर एक मोड सिलेक्ट करते हो तो आप सिर्फ 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एन एडिशनल मोड तो आप 7 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए 7 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट कर सकते हो व्हाइल फिलिंग द फॉर्म. सो ये मेक श्योर करना है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, हैव वी फिल्ड द फॉर्म फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स और नॉट. क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट की डेडलाइन जा चुकी है या अपकमिंग है तो पहले हम ये चेक कर लें कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हम फिल कर रहे हैं हमने उनका फॉर्म अलग से जाके फिल किया है या नहीं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कैसे अप्लाई करना है. सो प्लीज नोट डाउन दिस वेबसाइट. ये आईमा का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे जाके हम मैट 2024 के लिए रजिस्टर करेंगे. अनदर थिंग इज द पेमेंट ऑप्शंस आर आल्सो गिवन ओवर हियर. यू हैव द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस. ठीक है ना. फीस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं एग्जाम फी की तो IBT, PBT या CBT तीनों में से कोई एक मोड अगर सिलेक्ट करते हो सो यू आर पेइंग ₹2100 ओवर हियर. अगर डबल मोड के लिए जाना है
जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, आईबीडी प्लस आईबीडी, पीबीडी प्लस आईबीडी, और पीबीडी प्लस सीबीडी, और सीबीडी प्लस आईबीडी, देन यू नीड टू पे अ टोटल ऑफ ₹3300, जैसा हमने डिस्कस किया कि एडिशनल 1200 फी यू हैव टू पे इफ यू आर सिलेक्टिंग एन एडिशनल मोड ओवर हियर. Now, essential documents that you should keep ready with you. Valid email ID should be there when you are registering. That is mandatory. अभी तक हमने इतने सारे एग्जाम के फॉर्म्स भरे हैं, तो आई एम श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल होंगे. You need to have a scanned image of your photograph, okay, which should be between 10 to 50 KB. Again, scanned image of your signature 5 to 20 KB का होना चाहिए. And the following documents, if you're paying through the credit card or debit card, so make sure all these things are readily available with you. Okay, now important dates with regards to exam, another important thing. तो अगर मैं आईबीडी मोड की बात करूं, यानी कि जो हम एग्जाम घर से बैठ के या कहीं से भी बैठ के लिखने वाले हैं, आईबीडी मोड दैट इज रिमोट बेस्ड प्रॉक्टर्ड इंटरनेट मोड वाला जो टेस्ट है, उसके काफी सारे स्लॉट्स अवेलेबल हैं. तो अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो यू विल बी एबल टू सिलेक्ट दी स्लॉट्स एंड एवरीथिंग. बट इफ आई गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द डेट्स, तो आईबीडी की जो डेट्स हैं, वन इज 24th Feb, another is 3rd March, and another date is 8th of March. तो ये सारी जो डेट्स हैं ये आईबीडी की डेट्स हैं. सीबीडी और पीपीडी सिर्फ एक ही डेट को होगा, तो हम फटाफट से उसका भी स्केड्यूल देख लेते हैं. लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर ओपन फॉर मैट, और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है 20th of February, दैट इज ऑन ट्यूसडे. एडमिट कार्ड जो है पीबीडी के लिए, दैट इज पेपर बेस्ड, जो ओएमआर शीट वाला टेस्ट है, उसका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो 22nd of February को from 5 PM onwards you can download that. Then test date is 25th of February, यानी कि कुछ ही दिन में पीबीडी वाला टेस्ट will be there for MAT 2024. Now, if I talk about the CBD mode में online registration का last date is 5th of March, again Tuesday. Then admit card आप डाउनलोड कर सकते हो 8th March, that is 5 PM onwards. Then test date जो है CBD का 10th March 2024. तो CBD मोड का जो टेस्ट है उसके लिए यू डेफिनेटली बी एलोकेटेड और सेंटर और सिटी. सो जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर या कौन सा सिटी मिला है. यू कैन गो एंड गिव द एग्जाम. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द एग्जाम पैटर्न ऑफ मैट 2024. हालांकि मोर और लेस सारे एग्जाम, सारे ओमेट्स जो हमने दिए हैं उसकी तरह ही है. यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज इन द नेम. इफ आई हैव टू से, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग का एक सेक्शन है. यू हैव 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स होते हैं. पर क्वेश्चन यू गेट 1 मार्क. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, अगेन 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे भी. Then you have mathematical skills, that is a quantitative aptitude. 40 questions, again 40 marks. Data analysis and sufficiency, 40 questions, 40 marks. Then you have Indian and global environment, 40 questions, again 40 marks. Now total number of questions here it's 200, and the maximum marks is 200 over here. ठीक है. Now each section carries 40 questions. जैसा कि हमने देखा, हर क्वेश्चन एक ही मार्क कैरी करता है. Negative marking is applicable for each wrong answer. So you do have negative marking. +1 you get for right answer. और अगर मैं negative marking की बात करूं तो the negative marking is 0.25 over here. Marks will not be deducted for the questions left unanswered. So your marks will not be deducted if you leave any question unattempted. So it won't be deducted. The marking scheme is same for all the 3 modes of exam. So कुछ difference नहीं है in the modes. The marking scheme is same. Yes, if I talk about the duration of the exam duration is of 150 minutes. That is 1 hour 30 minutes. So ये हम note down कर लें. Okay, the duration is 1.5 hours. Now, if I talk about the syllabus of the exam, तो सबसे पहला section हम देख लेते हैं intelligence and critical reasoning. फैमिली ट्री, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं ओमेट्स की प्रिपरेशन जब हमने की है. मल्टी डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शंस, पजल्स, विजुअल रीजनिंग, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. यू विल हैव सीरीज,
न्यूमेरिक ग्रिड, पाई चार्ट, ब्लड रिलेशंस, क्रिटिकल रीजनिंग होगा बिकॉज ऑब्वियसली द मेन थिंग इज दिस ओनली ओवर हियर, क्रिटिकल रीजनिंग इज द मेन टॉपिक. कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉलम ग्राफ्स, graph representing area. So these are the topics that will be there in the intelligence and critical reasoning section. You can pause the screen, you can take a screenshot, and you can note down the topics. Now let us look at the language comprehension section. So you have grammar over here, phrases and idioms, one word substitution will be there, parts of speech will be there, you have vocabulary, parajumbles, synonyms and antonyms, you have verbal ability, you have reading comprehension, you have sentence completion and sentence correction. So this is the language comprehension section or uske important topics. Okay, now let us look at the mathematical skills. HCF, LCM would be there. You have commercial maths over here. You have complex numbers, percentages होंगे, permutation combination है. You have binomial theorem. You have geometry. You have elementary mathematics. Profit and loss है. Sequence and series है. Surds and indices है. You have simple interest, compound interest, heights and distance. Again, arithmetic वाले topics भी हैं यहाँ पे. Inequalities, trigonometry, Venn diagrams will be there. Speed, time, and distance. You have triangles, you have set theory, you have number systems, circles would be there. Mixtures and allegations hai, linear programming hai, and equations is there. So this is the mathematical skills यानी कि quantitative aptitude जैसा कि आप बाकी एग्जाम्स में देखते आए हैं. So this is the syllabus for the same. Now, if I talk about data analysis and data sufficiency, तो यहाँ पे tables रहेंगे, you have pie charts, you have caselet based data, you have charts, you have graphs over here, you have Venn diagrams again over here, you have bar diagrams, you have data analysis and data comparison related questions. You'll have definitely have data sufficiency question because the section is heavily based on that. Now, if I talk about Indian and global environment, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं now. More or less, it is you can say it's like a general awareness और जीके का ही section है ये, but इसका नाम कुछ अलग है यहाँ पे. Current affairs से related questions होंगे, so I'm sure you're keeping an update. Interview का preparation आप लोग कर रहे हैं, बाकी entrance exam की आप तैयारी कर रहे हैं, so I'm sure you're keeping an update on the daily current affairs. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सीईओज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसा कि सीमैट वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. ऑल दीज थिंग्स आर मोर और लेस द सेम. अवार्ड्स एंड विनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड आ सकता है. You'll have company punchlines, another important thing that how well versed you are with the company punchlines. History related questions would be there. International organization भी आएगा. Why? Because its global environment is also there. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ Indian related ही general awareness वाली चीज आएगी. You'll also have international stuff also over here. You have statements and quotations. You have social issues, geography, sports, finance, another important topic which will be there. Corporate news, science, entertainment, and politics. Okay, students, so that's all from my side. I hope now you might be aware of the things that we need to cover with regards to MAT 2024, the important dates. So अगर अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया है मैट के एग्जाम के लिए तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए बिकॉज द डेडलाइन इज इन फेब एज यू ऑल नो एंड द एग्जाम इज ऑल्सो इन फेब एंड मार्च तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है and the preparation level that you need to do over here has to stay between easy to moderate because the exam is not that difficult. तो अगर कैट की और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से की है, अगर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, तो क्रैकिंग दिस एग्जाम वोंट बी दैट डिफिकल्ट. और अगर और अपडेट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट के टॉप कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून टू सुपरग्रैड्स कैट.